Hi everyone, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. So आज मैंने डिसाइड किया है कि I'm gonna make something out of एयर ड्राई क्ले एंड जो मैंने एयर ड्राई क्ले यूज़ किया दैट्स अ जोवी एयर ड्राई क्ले। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इफ़ यू गाइस वांट यू कैन बाय फ्रॉम देयर। मैंने इस क्ले से पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेट मी शो यू दोज ऑल्सो। So one is this, I have made this flower shape cup holder. You can also use it as a candle holder. मैंने इसके process की link भी description box में mention करी है. You guys can watch the full tutorial of this product. Another one that I made is this little mirror frame. So मैंने इसका भी ट्यूटोरियल पोस्ट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे. You guys can go and watch there. I've also mentioned the link of this video in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोना मेक अ बॉक्स यूजिंग दिस क्ले। सो मैंने कुछ आइडियाज़ पिंटरेस्ट पे चेक करे थे, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक हार्ट शेप बॉक्स बनाऊंगी एंड उसके ऊपर मैं एक बो बनाने वाली हूँ एंड उसका डेकोरेशन भी लिटिल बोज से होगा। एंड फॉर दैट मैं उसके लिए एक मोल्ड यूज़ करूँगी। इसमें हर साइज़ के हर डिज़ाइन के बोज हैं, तो मैं ये वाला मोल्ड यूज़ करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया दैट आई हैव इन माई माइंड। सो या, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट मेकिंग आवर हार्ट शेप box. Presenting you a little ASMR video for you guys. Now सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाउडर डालूंगी so that I can easily roll out my clay, and after that I have cut a piece of paper in a heart shape and मैं इसको भी roll out करूंगी clay के ऊपर so that I can give a proper heart shape to my box. After cutting the clay in a heart shape, I'm using some amount of water to give a smooth texture to the base, and now the base is ready. Now for our heart shape box we need boundaries also, means I'm going to cut the clay in equal parts so that मैं base के चारों तरफ clay को अच्छे से लगा पाऊँ to give a proper heart shape. And I'm adding thin layer of clay between the edges to make our box more stronger. We are going to repeat the process for both the sides. And with the help of clay tool, हमें सारे edges को properly fix करना है so that the box will not break. And always use water to smoothen the edges. Now for the top of the box, I'm going to follow the same process. मैं heart shape paper को रख के clay को cut करूँगी. And now मेरे पास क्योंकि bow cutter नहीं है, so I'm going to draw the shapes of the bow and मैं उससे bow बनाकर box के top पे उसको लगाने वाली हूँ. So the base is ready. This is how it is looking. We're almost done. It is not yet dried properly. It is looking like this. It is not fitting perfectly because the sanding is not yet done. And जैसे ही मैं इसको sand कर दूंगी sand paper से properly, तो ये अच्छा दिखेगा, smooth दिखेगा, and हम उसके बाद उसको paint कर सकते हैं. So now for the little bows which I was talking about, उसके लिए मैं ये वाली क्ले नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं और वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको सबसे पहले पेंट करूँगी एंड उसके बाद मैं पॉलीमर क्ले से ही वो लिटिल बोज यहाँ पे लगाने वाली हूँ। एंड या ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि ये बॉक्स आपको कैसा लगा। एंड नाउ दैट द बॉक्स इज रेडी, आई एम गोइंग टू यूज सैंड पेपर टू गिव अ स्मूथ टेक्सचर टू द बॉक्स. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई जेसो, बिकॉज जेसो को अप्लाई करने से जितना भी रफ सरफेस होगा बॉक्स का वो सारा स्मूथ हो जाएगा. Now comes the most interesting and my favorite part, which is bow making.
सो आई एम यूजिंग पिंक पॉलीमर क्ले एंड दिस मोल्ड. सो इस मोल्ड की हेल्प से मैं काफ़ी सारे बो बनाने वाली हूँ. मैंने इन सबको बेक कर लिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक दीज बोज on this box with the help of a glue. And along with this, I'm going to add some pink heart, and I'm using the same pink color to paint this big bow. Now for the final touch, I'm using this UV resin, and मैं इसको थोड़े थोड़े parts पे लगाने वाली हूँ, and I'm going to let it dry under the UV light. Let me show you the final results. Ta-da! This is how it looks. Let me show you it from inside also. I'm in love with this. ये मेरी अब तक की best creation है. And let me know in the comment section below what you guys think of this. So yeah, this is it for this video. I'll see you super soon. Bye bye.